हेलो गाइस हेलो गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? हाउ यू आर डूइंग? सॉरी फॉर बीइंग लेट टुडे लिटिल बिट, बट वी विल compensate that. I have come with some very good questions for all of you. So, but before we start, tell me how you are doing and how was your day till now? When will the session start? Started, Abhishek. So guys, till now we have discussed many questions, including some concepts and everything. So how was your experience? And this is our last session for the day. And for this, Yari. So how are you? Hello Hardik, hello Atesh. Good evening Abhishek. आपकी वॉइस थोड़ी लो आ रही है। सच में? हेलो हेलो, इज द वॉइस ऑडिबल गाइस? हेलो गाइस, आई एम टॉकिंग टू यू। हाँ अभी ठीक है, ओके हार्दिक, वंडरफुल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट सेशन। So this is our episode 3, technically session 4. We have discussed many questions till now and some concepts also. We talked about the concepts related to designing of CSTR, effect of back mixing, the reaction kinetics and thermodynamics behind the refrigeration. We did discuss a little bit about the Maillard reactions. I give you the ideas, hint. We talked about some parallel reactions. I also asked you to do the exergy analysis and the effect of an exergy analysis on the industrial reactors. The optimization of reactors we discussed, the non-isothermals, and so many things. We also talked about the Thiele modulus. I give you the brief idea about the Hatta modulus, and in on coming Monday, Sunday or Monday, I will tell you in the group itself by the today evening. We will have one session, a proper session about the Hatta modulus on our Unacademy special classes so that every one of you can attend, even if you don't have subscription. Okay, so these things we did. So this is something about me. All of you know myself, Ankush Gupta, helping the students for GATE Chemical Engineering exam, PSUs exam since 2013. One of the most experienced educators along with Ankur. And I here on an academy, I will discuss these subjects with you: thermodynamics, reaction engineering, fluid mechanics, process calculation, and aptitude. So let's start our discussion.
series of interview preparation sessions, SIPs, and this will be our fourth SIP. We discussed this question with you. Catalytic converters also we discussed the effect, the use of catalytic converters in the motor vehicles. The design equation of CSTR we discussed. Advantages and disadvantages of reactors we discussed. Batch reactors, CSTR and PFR. Thermodynamic consideration and reaction kinetics of gas liquid reaction. I gave you the brief idea. And on Sunday or Monday, you will get to know by today evening in your group. We will have a proper detailed session on this particular thing. The principles of CRE and thermodynamics in the designing of nuclear reactors. I did ask you to try this. So some of you told me that you did, and some of you were saying that it was not possible for you. So what will I do? I will share notes with you, or I will have a brief session on Unacademy Plus, Unacademy स्पेशल क्लासेस. ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कर चुके हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर उस चीज़ को डिस्कस करने का बेनिफिट नहीं है, तो मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा, तो जिन्होंने नहीं किया है वो वहाँ पे आके कर सकते हैं. I will tell you about the some basic points related to nuclear reactors, the nuclear some basic terms. Maybe you already know, you have, if you have studied the physics chemistry of your class 11 12th. So this is one important question related to from the point of view of your NPCIL. In Bark, they are not going to ask you any such thing until and unless you will not mention. Then the CRE thermodynamics in cooking baking. I told you to study the Maillard reaction and its kinetics. Okay. The effect of temperature gradients in non-isothermal reactor we discussed in last class. Thiele modulus and everything about the Thiele modulus, how we can optimize the Thiele modulus, how the optimization of Thiele modulus will affect the reactors and all that we have discussed in last session. Now today we will talk about this, the key considerations in the designing of reactors if the reaction is for polymerization reaction. And this is one question for all of you. Milk spoils more quickly in summer or in winter. Why? One question is, what is the reaction kinetics involved in the photosynthesis reaction and what will be the order of this reaction? And what will be the order of reaction? Okay, this is one question we will discuss. The what is non-ideal reactors, how they are different from the ideal reactors, and how would they how we how we can optimize the non-ideal reactor. Basically, how we can improve the performance of the reactor so that the non-idealities we can reduce. And last question for the day will be, what is Michaelis Menten kinetics and the significance of Michaelis constant Km. Okay, so this is what we are going to discuss today. So before we start our discussion, if any one of you have any doubt or anything you want to say, discuss, you can mention. जो हेड है वो पूछते ही हैं कि रेफ्रिजरेशन के बारे में. मुझे भी पूछा था बार्क में टेक्निकल ऑफिसर के इंटरव्यू में. यस, हार्दिक. यस, आई होप यू आर एबल टू गिव द आंसर, because refrigeration is one some important topic which you can explain from many point of view. ठीक है, और उसे हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उसका यूज कर सकते हैं. रेफ्रिजरेशन की बात ये लोग मास ट्रांसफर में भी कर सकते हैं. ठीक है, इफ यू गाइस नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन डिह्यूमिडिफिकेशन, इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजन, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट्स. ठीक है, तो वहां पर भी रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, बिकॉज इट इज वन वेरी कॉमन थिंग इन आवर डेली लाइफ.
So that's why I said in this session we are trying to cover all the most important top questions which can help you to understand the concepts as well, and with the help of these you will be shall be able to answer the things in your own words. Prop- है ना? So shall we start? Let's start with this question first. Milk spoils more quickly in summer or in winter? What do you guys think? Take couple of minutes, think, answer. You don't need to explain all the details. You just can write down the points. And then I will explain in my words. Summer, why? That is the point, now. Okay, let me answer this for you. The milk spoils faster in summer. I believe all of you know this answer. आपको नहीं पता तो आप अपने घर में मदर से फादर से ही पूछ सकते हो, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है? बट द रीजन इज इम्पोर्टेंट. ठीक है? Why? You guys know that generally in the summer, the surrounding temperature is around 25 to 45 degrees Celsius, depending on the cities, the areas. While in winters, the surrounding temperature is usually below 20 or 25 degrees Celsius. Okay. So, in case you know that, if we talk about the milk, so what happens in the milk, all of us know that we used to have some microorganism, which you can say is something like pathogenic bacteria, or if you have you don't have any idea, you can simply say bacteria also, just like norm common people day to day life. कोई problem नहीं है. ठीक है? So in interviews, it is not important to use English. ठीक है? If you are not comfortable in any other language, so you can answer in your local tongue as well. ठीक है? After getting a permission from the panel.
क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि पैनल में एटलीस्ट किसी एक को तो आपकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती हो। आप बोलो जी आई एम कंफर्टेबल इन फ्रेंच और पैनल में किसी को फ्रेंच नहीं आती तो फिर कैसे चलेगा? तो इसीलिए तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मिल्क में, वो जनरली क्या करते हैं? इफ यू हैव स्टडीड द चैप्टर ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स, आई बिलीव यू हैव डन दैट एट लीस्ट फॉर योर गेट एग्जाम. So there we talk about the Michaelis-Menten kinetics, we talk about the Monod equations. So there we study a topic known as microbial growth, or you can say cell growth. So generally, if I talk about the pathogenic bacteria present in the milk, for them to survive, to thrive, the favorable temperature, the suitable temperature is around 25 to 40 degrees Celsius. ठीक है, 25 और you can say 35 to 40 degrees Celsius usually. ठीक है, तो this is first reason for this microbial growth, or you can say cell growth. So this is fast. Growth is faster in summer as compared to winters because of the high temperature. विंटर्स में सराउंडिंग टेम्परेचर कम होता है तो सेल ग्रोथ जो होती है वो भी कम होती है. बट इन केस ऑफ समर सराउंडिंग टेम्परेचर इज क्वाइट हाई, सो द बैक्टीरियल ग्रोथ विल बी हाई, विल बी फास्ट. तो दैट्स वाई आपका जो मिल्क है वो समर में जल्दी स्पॉइल होगा. ठीक है, एज कंपेयर टू विंटर्स. अगर इस एग्जाम्पल को आपको अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेन करना है, तो आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. आई होप यू नो वन common example of autocatalytic reaction from daily life. What is that? One common example of autocatalytic reaction from our daily life. All of you know. What is that? क्या है एग्जाम्पल वो? ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन का एक डेली लाइफ एग्जाम्पल. कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सोच सकते हो कि घर में हम क्या करते हैं जब हम दूध से दही बनाते हैं, वी कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. So what we do generally, if you have the idea, in the milk, that is a raw material, a reactant, curd, that is a product. So autocatalytic reactions are those where a product itself act like a catalyst. I hope you know that. है ना? So what happens in milk to convert to the milk into curd in less time? What we do, we introduce some small amount of curd along with the milk initially. At time t0 in the container you have milk, we add some curd there. So what that curd do, that curd auto catalyze the milk and converts it into curd. Overall milk will convert into curd. Okay. If this milk to curd formation you are doing in winters, it will take time. But if you are doing this in summers, it will occur in less time. मतलब क्या है? मतलब ये है कि गर्मियों में दही जल्दी बन जाएगा और विंटर्स में थोड़ा देरी से बनेगा. The formation of milk, the formation of curd from milk in summer will be at slow pace, but in summer it will be at fast pace, and in winters it will be at slow pace. Okay, so this is one answer. So as temperature is high, formation will be high, cell growth will be high. This is one example, one reason. ठीक है, why milk spoil in summer faster than winters. अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट इज रिएक्शन काइनेटिक्स. You know that Arrhenius equation. If high temperature is there, then rate constant will be higher.
So obviously rate of reaction will be higher. In summer, temperature is high, so obviously rate constant, then rate of reaction will be high. So conversion of milk into curd, spoilage of milk into waste will be high as well, will be fast as well. Okay. So I hope it is clear to all of you. This is one point. Okay. And third point, you can simply say, if you wish, thermal degradation. Thermal degradation means in milk, the nutrients, the oils, the fats which are present, they can degrade thermally in summer faster. Okay, because they are thermally sensitive. I can write thermally sensitive ingredients present in milk. For example, oils and fats, proteins, etc. at high temperature can degrade themselves, which will result in the bad taste and odor. So this is something about the spoilage of milk. Ki why the milk spoilage is fast in summer and slow in winters. इसीलिए and to prevent the milk spoilage in summer, what they can do many things like pasteurization reactions, or you can say pasteurization process, sterilizing. So these are the things. Cold storage. आपके घर में मिल्क आया, आपने उन्हें बॉईल किया, बॉईल करने के बाद जैसे ही वो ठंडा होता है उसे आप रेफ्रिजरेटर में रख दो. एंड यू नो दैट द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज जनरली below 4 degrees Celsius. Refrigeration generally occurs at temperature below 4 degrees Celsius. So at this temperature, the components which are thermally sensitive will not degrade. The bacterial growth will be very, very low. So ultimately, you can say the shelf life of the component of the milk will increase, will extend, and rate constant K will also be very low because of the lower temperature. So these are some points regarding the spoilage of milk. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर गाइस. ठीक है, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो वो मास ट्रांसफर में आपसे पूछ सकते हैं. मास ट्रांसफर में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? फॉर एग्जांपल लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह से डेली लाइफ से कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, ऑल्दो इफ मास ट्रांसफर का सेशन होता है तो वहां पे अंकुर सर आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चंस, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ एक क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, व्हेन द इन we wash our clothes, and after the washing we put our clothes for drying purpose in balcony in open air. तो वो जो clothes हैं, when these clothes will dry fast in summer, rainy season, winters. First question. इसी का second part वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, when these clothes will dry faster, where these clothes will dry faster, in Delhi, Mumbai or Chennai, like coastal areas, Mumbai, Chennai, Kolkata, or in the hill stations like Shimla, Mansoori, etc. Ladakh. ठीक है, तो सेम थिंग है. सेम ही they can ask milk spoilage, where the milk will spoil faster, in New Delhi, coastal areas like Kolkata, Chennai, Madras, sorry, Chennai, Madras are same, Mumbai, or in hill stations. ठीक है,
और इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन बन सकता है, लाइक दे कैन आस्क यू, all of you already have Maggie. You like to have Maggie. You know how to prepare Maggie as well. I believe you are engineers, and this is one thing all the engineers know, how to cook Maggie. So every engineer is a good cook also. Anyways, so where the Maggie will prepare fast. ठीक है, if we want to prepare Maggie, जैसे टीवी एड्स में आता है, like 2 minutes noodles, instant noodles, you can prepare them in 2 minutes. ठीक है, 2 minutes का मतलब क्या है कि कहाँ पे जल्दी बनेगी आपको पता है, प्रैक्टिकली आप अगर आप ट्राई करो तो वो 2 मिनट से ज्यादा ही लगते हैं, इवन इफ इट इज अ प्लेन मैगी। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज वेयर द मैगी विल बी प्रिपेयर्ड, विल गेट रेडी फास्टर। ठीक है, न्यू दिल्ली लाइक प्लेन एरियाज, कोस्टल एरियाज लाइक चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, और द हिल स्टेशंस लाइक शिमला, लद्दाख, मंसूरी एक्सेट्रा, और दार्जिलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द हिल स्टेशन। तो ठीक है, दे आर सो मेनी। तो कहाँ पे मैगी जल्दी बनेगी? रीजन सबका ऑल, explanation is also same kind of, ठीक है, but the factors which the parameters, the points which we will use to explain that will be different। जब ड्राइंग और क्लोथ्स की बात आ जाएगी, ह्यूमिडिफिकेशन की बात आ जाएगी, तो वहां पे आपका ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ड्राइंग रेट, ये सब फैक्टर्स आ जाते हैं। जब मैगी की बात आ जाएगी, कुकिंग की बात आ जाएगी, तो वहां पे भी बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, प्रेशर्स, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, सेम ही चीज है। So you can think like कि almost we have a same phenomena happening in all the places, but the way of explaining things will be slightly different. Especially if we talk about the drying of clothes, so the main point is humidity, the driving force, है ना? So I hope you can understand all these things, how they can relate the concepts from daily life। ठीक है, इसी तरह अगर थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो सेम चीज को ये आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, if you want to boil rice or if you want to cook food in pressure cookers, so where they will get cooked fast। प्रेशर कुकर में हम कोई फूड बना रहे हैं, लाइक वी आर बॉइलिंग राइस और एनी फूड इन प्रेशर कुकर्स, तो वेयर दे विल वर्क फास्ट, इन माउंटेन एरियाज, इन हिल, इन कोस्टल एरियाज, इन प्लेन एरियाज, वेयर सेम थिंग, थर्मोडायनेमिक्स में आ गई। तो you should know about all these factors, and all। ठीक है, तो if we will have any session related to thermodynamics or FM, there I will explain you these things in proper details, but here I have told you about the CRE point of view, and from all those point of view you can think। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अब यहाँ पे हमने बात की इस एग्जाम्पल की, लाइक पेस्चराइजेशन। ठीक है, तो व्हाट इज पेस्चराइजेशन, क्या होता है? I hope all of you know it is a process where we supply the heat for a small period of time. We heat up the material for a small period of time so that all the bad bacteria present in that can get killed. The harmful bacteria can get vanish. ठीक है, so I hope it is clear now to all of you. Now let's move to the next question. What is the reaction kinetics involved in photosynthesis reaction, and the order of reaction will be? Take couple of minutes, think, then I will explain. If you got any answer, you can also mention.
Yes, Smriti, that's correct. If we talk about the photosynthesis reactions, so you can think photosynthesis reactions. Basically, here, when we talk about the photosynthesis reaction, so here, you know that photosynthesis reactions takes place in the plant with in the presence of light and chlorophyll. ठीक है? Light energy and chlorophyll are the key, where you know that ADP, ATP, all these things are there, get formed, NADPH get formed, all these things. So if you know about this, you can study. If you have time, तो it's wonderful. Otherwise, leave it, no problem. एक जनरल ओवरव्यू आपको होना चाहिए, ठीक है? बट एक पॉइंट है जो आपको क्लियर होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. If by chance they have a detailed discussion on this, if they do any detailed discussion on this, so you should know that. Because if any one of you is have done BTech in your biochemical engineering or something like that, so you should know, or maybe you guys already have the idea. When we talk about the photosynthesis reaction, here we talk about two types of reactions. When we study these things in detail, when we explain these things in detail, first is light dependent reactions, second is light independent reactions. Light dependent reactions like are, you can say, that same reaction which we talk about, which is a photosynthesis reaction where the CO2 and H2O reacts to give something. And light independent reactions, you can say, is kind of a Kelvin cycle, or you can say the dark reactions, basically, as the name suggests. ठीक है? So you can study about these things, at least the basic idea, and then you can explain in proper details. But here, if I talk about from the general point of view, a basic point of view, so you know photosynthesis reaction is what? CO2 reacts with water in the presence of light energy and chlorophyll to produce glucose and oxygen. This is the photosynthesis reaction. So here, if you go by the Power's law, so you know that here you can write the rate equation as K, concentration of CO2 power alpha, concentration of H2O power beta. Think like this. Okay. And here in the atmosphere, concentration of CO2 and concentration of H2O. Here, if they ask, so you can see the overall order of the reaction will be alpha plus beta. That will be the order of reaction in general, you can say. But you know that in atmosphere, in the surrounding, the concentration of CO2 and H2O is in excess. Okay, in very large amount. And when their concentrations are present in very huge amount, so you know that these values will be almost constant. So you can say rate of reaction is almost constant, K dash. And here you can see R is not independent. R is independent of any concentration. So we can say it is a zeroth order reaction. Or you can simply say practically this reaction is following zeroth order kinetics. This is what we say pseudo zeroth order reaction. ठीक है? तो एक्चुअल में वो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शंस नहीं होते, थियोरेटिकल ऑर्डर इज डिफरेंट, but practically the reaction follows zeroth order kinetics. That is the meaning of pseudo order mechanism. I hope it is clear now. ठीक है? अगर इसे आपको ये सब आपने पढ़ा होगा तो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन इन अ वेरी ब्रीफ डिटेल्स
If you want me to, I can explain this a little more. So just tell me. I have told you this is the basic idea about the order of reaction. And for the reaction kinetics, you can use these two things to explain this. Okay. Light dependent part and the light independent part. Light dependent part basically the absorption of light, the electron chain reaction that will come under the light dependent part. After that there will be light independent part जहाँ पे हमारी Kelvin cycle की बात हो जाएगी or Calvin cycle whatever you like to pronounce. Then or you simply say dark reactions. Then the carbon absorption will be there or carbon fixation whatever you like to say. Then there will be a regeneration phase or you can say reduction phase. There we will where the ADP produced from the light dependent reactions will convert into ATP and get consumed. Okay, similarly NADPH will be there. So all these things are there, very basic. So I'm not going in those details, but if you wish to you can study them by yourself. Okay, it's not a big deal, very easy thing. तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, आई विल एक्सप्लेन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे ये आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज नॉन आइडियल रिएक्टर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन आइडियल रिएक्टर। तो कैन एनी वन ऑफ यू एक्सप्लेन दिस। Molecules having same residence time in the reactor. mm, mm, you can say that it, but it is not a proper answer means ये तो सबको पता है, everyone will answer like this. A common in simple terms we can answer like this. ठीक है, so the actual explanation will be something like this. Since you are chemical engineer, so you should answer like that. So let me give you a basic idea. What is ideal reactor and what is non-ideal reactor? Let me help explain this little bit. Okay, just like a story. See this story and you will be able to understand how you are supposed to answer. A common answer will be like means the common people know. They will say ideal reactors are those where all molecules have same residence time. Same residence time. Everyone knows this. ठीक है, very common or layman answer.
Non-ideal reactors are those where molecules have different resistance time. But if I am talking about the meaning, ठीक है, like अगर कोई आपसे पूछता है what is red color, obviously you will not say opposite of yellow or opposite of blue, ठीक है, in terms of wavelength. You will answer properly ना कि red color क्या होता है, you will define red color. तो सिमिलरली अगर मैं आइडियल या नॉन आइडियल रिएक्टर की बात कर रहा हूँ तो हमें उन्हें डिफाइन करना है, उनका मीनिंग बताना है. एंड मीनिंग मीन्स फ्रॉम द स्टेटमेंट वी आर यूजिंग वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट. अब इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, आइडियल रिएक्टर आर दोज वेयर मॉलिक्यूल्स हैव सेम रेजिडेंस टाइम, नॉन आइडियल रिएक्टर्स आर दोज वेयर मॉलिक्यूल्स में हैव डिफरेंट रेजिडेंस टाइम. तो इस स्टेटमेंट से क्या कहीं भी हमें मीनिंग पता चला कि एक्चुअली आइडियल रिएक्टर का मतलब क्या होता है, नॉन आइडियल रिएक्टर का मतलब क्या होता है? नहीं पता चला ना. तो वी शुड, दैट्स व्हाई आई से इट इज अ वेरी लेमन आंसर, जो बहुत ही मतलब किसी भी पर्सन को आसान भाषा में समझाने के लिए हम बोलते हैं, या इस टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हम बोलते हैं, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं. ठीक है. तो सी, आई होप ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज रेजिडेंस टाइम इज. Residence time is the time spent by a molecule within the reactor. Time spent by a molecule within the reactor. So now suppose we have an ideal one reactor. Let's say the ideal reactor. Just a minute. And here I have non-ideal reactor. So let's understand this with one simple example. Suppose in ideal reactor I am sending three molecules A, B and C. Suppose A is entering at 1 p.m. sharp, B is entering at 1:10 p.m. and C is entering at 1:15 p.m. Okay, same here. Suppose ABC entering at 1 p.m., 1:10 p.m., 1:15 p.m. sharp. So here in ideal reactor, as you said, all molecules will have same residence time. So suppose the residence time, the average residence time is 10 minutes. So what is the meaning? The meaning is all these three molecules will leave the reactor, let's say A, B, and C. So if their average residence time is 10 minutes and it is an ideal reactor, so all molecules are supposed to spend the same time inside the reactor. So A was entered at 1 p.m. Obviously, A is supposed to leave at 1:10 p.m. B entered at 1:10, so B is supposed to leave at 1:20 p.m. C entered at 1:15, so C is supposed to leave at 1:25 p.m. So you can see all molecules entered at this time and leaving at this time. So basically they spend the same time inside the reactor. So here you can see, you can observe the molecule A entered at 1 p.m., left at 1:10. C entered at 1:15, left at 1:25. So the molecule which entered at first is also leaving at first. Means first in, first out. The molecules which entered in last is also leaving at last. Last in, last out. Okay. थोड़ा सही से लिख लेते हैं हम. Sorry.
first in, first out, last in, last out. So what happens here, if you try to draw a profile, suppose the input profile was something like this. This is the time t0, this was the time 5 between concentration versus T, the input profile. So here, if you try to draw the output profile, so the molecule which entered at first place, like this, will leave at first, and last molecule entered will leave at last. तो जिस ऑर्डर में मॉलिक्यूल्स एंटर हुए उसी ऑर्डर में जाएंगे. तो इफ यू सी द इनपुट प्रोफाइल, ये मॉलिक्यूल पहले गया, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये सबसे बाद में. तो से इन द सेम ऑर्डर दे विल लीव. तो आउटपुट प्रोफाइल विल आल्सो बी लाइक दैट, द सिमिलर. ठीक है. तो here you can see this molecule, if the average time was 10, so this molecule entered at 0, so is supposed to leave at 10. This was leaving at, entered at 5, so this will leave at 15. That's how you can see the profiles will remain same. So this is something about the ideal reactor you should know, the profiles. But here in non-ideal reactors, what will happen? See, still I haven't talked anything about the ideal and non-ideal reactor. I'm just giving you the explanation of your statement. ठीक है. जैसे मोस्टली लोग हम यही बात करते हैं ना कि आइडियल रिएक्टर में रेजिडेंस टाइम सेम होता है, नॉन आइडियल में डिफरेंट होता है. तो हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं. फिर इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि एक्चुअल में आइडियल एंड नॉन आइडियल रिएक्टर्स का मतलब क्या होता है. ठीक है. तो ए, बी एंड सी. तो here is also suppose average residence time is 10 minutes. So suppose A entered at 1 and spent 10 minutes. So it will supposed to leave at 1:10. Is it visible? Yeah. B entered at 1:10. So suppose B has spent 15 minutes by chance. So it is supposed to leave at 1:25 p.m. And let's say C has spent only 5 minutes. So it will leave at 1:20. So here in this example, you can understand the concept of first in, first out is not valid. Last in, last out is also not valid. क्योंकि जो molecule, you can see B entered before C. मतलब B पहले enter हुआ, B entered first, but B is leaving at last. So this is not valid. C entered at last, but C is leaving before B. So this is also not valid. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि in case of non-ideal reactor, if this was your input profile, then the output profile will definitely be something different, will not be same. ठीक है. So you can see they are totally different output profile because different molecules are leaving at different time. ठीक है. And here if you want to draw the profile for residence time, that also you can do. So for ideal reactor, you guys can see, if I talk about here, number of molecules leaving, leaving the reactor. So in case of ideal reactor, you guys know that all molecules are leaving at the same time. So the output profile will be like this. And this will be the average residence time because all molecules are leaving at the same time. So the average residence time will be same as T. अब आपकी पूरी क्लास में सपोज अगर हर स्टूडेंट के 40% मार्क्स आते हैं तो क्लास का एवरेज भी 40% होगा. 70% आते हैं सभी के तो एवरेज भी 70 होगा. बट इफ आई टॉक अबाउट द नॉन आइडियल रिएक्टर्स, तो नॉन आइडियल रिएक्टर्स में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट रेजिडेंस टाइम. तो दिस प्रोफाइल विल बी समथिंग लाइक दिस इन जनरल. ठीक है. व्हाई? सो दैट आई विल एक्सप्लेन. सो जस्ट गिव मी अ मिनट. ठीक है. तो हेयर इन नॉन आइडियल रिएक्टर,
We have the distributive curve, a distribution curve. You can see a distribution curve we will have. Why that we will discuss. You know, that's why the analysis of this curve is called RTD. While in ideal reactor we don't have any distribution curve, तो यहाँ पे RTD का मतलब ही नहीं है. और अगर आपको यूज करना भी है तो आप बोलोगे RTD मतलब नॉन आइडियलिटी जीरो है. ठीक है. चलो वापस इस पे आते हैं कि आइडियल एंड नॉन आइडियल रिएक्टर्स का मतलब क्या होता है ना. What is ideal and non ideal reactor? How you are supposed to answer this? Now see this. So all of us guys already know that there is a formula known as distance is equal to speed into time. Now just focus. This entire feed, this entire feed, we will introduce in the reactor at once. Obviously, we don't introduce the feed one by one molecule. We introduce the bulk of feed. है ना? So when bulk of feed will there, so you can understand the bulk velocity of all molecules will be same. The bulk velocity of all the molecules will be same in both the cases. ठीक है. So if we assume, if we think like all molecules are moving at the same speed throughout, so now just see, in case of ideal reactors, all molecules are spending same time within the reactor. All molecules have same residence time. That means all molecules are spending same time inside the reactor. Means the time taken by the molecule to move from inlet to outlet will be same in case of ideal reactors. है ना? So distance speed is same, time spent by the molecule is same, or the time taken by the molecules to cover the journey, you can say, is same. So that means the distance traveled by the molecule will also be same. Is it clear? Can you understand this point fairly? Hi, I am class 10. क्या बात है? बढ़िया guys. आप पूरी की पूरी एक क्लास हो. Wonderful. I thought you are the you should be better. Anyways, so this is the case of ideal PFR. हम आइडियल पीएफआर की बात ही नहीं कर रहे नीरज. हम एक रिएक्टर की बात कर रहे हैं. डोंट गो फॉर विद द ब्लॉक डायग्राम. इट इज जस्ट अ ब्लॉक डायग्राम. इट इज नॉट द पीएफआर. एमएफआर में भी तो मॉलिक्यूल से टाइम लेते हैं ना ट्रेवल करने में. अब वो ऐसे ट्रेवल करें, मिक्स होकर ट्रेवल करें, लंबा ट्रेवल करें, जैसे भी करें, क्या फर्क पड़ता है. हम वो बात कर रहे हैं. बस मुझे ये बताओ, आपको ये पॉइंट समझ में आया जो हम यहाँ एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं. यस. ठीक है. तो आओ इसी पे आते हैं. So in ideal reactors, all molecules are entering with the same bulk velocity. The time taken by each and every molecule to travel this distance will be same. So that means the distance traveled by the molecule inside the reactor will also be same. Now here in non-ideal reactor, we can see all molecules are entering with the same speed, but the time taken by the molecules to travel this distance is different.
That means the distance traveled by the molecule inside the reactor is different. Clear? Now try to understand the same thing from different perspective, from the reverse perspective. We said distance is equal to speed into time. We said distance is equal to, sorry, let's say this. Time is equal to distance over speed. Time is equal to distance over speed. So in case of ideal reactor, the different perspective. All molecules are traveling the same distance with the same speed. That's why the time taken by all molecules is same. Can I say like this? For ideal reactor, all molecules are traveling the same distance with the same speed. That's why the time taken by all molecule is same. Yes or no? Can we say like this? Yes. Okay, Mahendra, we got your point. Maybe that is best. कोई बात नहीं, बी हैप्पी। और अगर आप बेस्ट हो तो आपको बोलने की जरूरत थोड़ी है। अब सचिन तेंदुलकर विराट कोहली आके थोड़ी बोलेंगे वी आर बेस्ट। चिल डूड, चिल। गाइस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? है ना? नाउ हियर, in case of non-ideal reactor, all molecules are traveling with same speed, but they are taking the different path. The path taken by all the molecules is different. That's why the time taken by the molecule is also different. Yes or no? In case of non-ideal reactors, all molecules are traveling with same speed, same bulk velocity, fine. But they are taking the different distances. The flow path is different. That's why the time taken by molecules is different. Yes or no? Yes or no? I hope you can understand this. है ना? तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल रिएक्टर्स। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग एंड दिस इज द ट्रू मीनिंग। व्हाई? बिकॉज अगर आपने पढ़ा होगा जब हम इसके बाद बात करते हैं नॉन आइडियलिटी की, तो नॉन आइडियलिटी के कॉजेज क्या होते हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉन आइडियलिटी? कॉजेज ऑफ नॉन आइडियलिटी, causes of non-idealities are dead zone. Causes of non-idealities are bypassing. Causes of non-idealities are overmixing or you can say turbulence. और ये तीनों चीजें क्या है? ये तीनों हमारे रिएक्टर की ज्योमेट्री पर डिपेंड करते हैं। If you know all these three things, causes depends majorly on the reactor geometry, nothing else. And here also I am talking about the flow path. In ideal reactor, molecules take same path. All molecules takes same path, follows the same flow path. And in non-ideal reactor, molecules may follow different path. So this is the meaning, and that will explain your non-ideality also. Because non-ideality is the parameter, is the which depends on geometry of the reactor, nothing else. रिएक्टर की ज्योमेट्री पर ही डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। इफ यू लुक एट दीज थिंग्स, द थ्री मेन रीजंस ऑफ नॉन आइडियलिटी। तो आई होप हम आपको ये पॉइंट क्लियर होगा।
कि what is the meaning of ideal reactor and what is the meaning of non-ideal reactor and how you are supposed to answer this. Is it clear now, Neeraj, Smriti, Mahendra, and everyone? Come on, guys. So many of you are you there? कुछ तो रिप्लाई करो, नहीं तो लोग सोचेंगे हमने व्यू बॉट्स लगा रखे हैं. ठीक है. यस. So I hope it will help you to explain the meaning of ideal and non-ideal reactor. Because non-ideality in the reactor is nothing but due to their geometry. And due to the difference in their geometry, we have these causes of non-idealities. Like if you look in a rectangular tank, like a CH3R, the idea was molecules should enter, get mixed, and leave. This was the idea. But if any molecule enters and goes directly to the outlet, molecule is entering in the reactor but not participating in process, directly going in the outlet. You can think like molecule was in some hurry. ठीक है, मे बी उसे कोई अर्जेंट कॉल आ गया होगा तो वो जल्दी जल्दी चला गया, एंटर हुआ और चला गया, कुछ किया ही नहीं उसने. तो दिस इज व्हाट नथिंग बट बाईपासिंग. और बाईपासिंग का मतलब क्या हुआ, रेजिडेंस टाइम क्या होगा इस मॉलिक्यूल का, शॉर्ट. डोंट से जीरो. अगर आपके माइंड में जीरो आया ना, जीरो मत बोलना, टेलीपोर्ट थोड़ी किया है. मॉलिक्यूल एंटर होने के बाद आउट होने में कुछ टाइम तो लगाएगा ना, इवन इफ इट इज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. टेलीपोर्ट थोड़ी हो रहा है कि एंटर से सीधा आउटलोड पे पहुंच गया, है ना. तो इट इज अ शॉर्ट रेजिडेंस टाइम. जीरो नहीं बोल सकते हम, जीरो का मतलब तो जीरो हो गया. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इन द मिक्सिंग टैंक्स, यू नो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द मिक्सिंग टैंक्स, तो व्हाट इज द मिक्सिंग प्रोफाइल. मिक्सिंग प्रोफाइल क्या होती है मिक्सिंग टैंक्स में, स्टरर्स में. तो यू नो दैट मिक्सिंग प्रोफाइल इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मिक्सिंग प्रोफाइल कुछ इस तरह से है, तो हमारे रिएक्टर में कुछ हमारे एक्सट्रीम कॉर्नर्स क्रिएट हो जाते हैं. सम एक्सट्रीम कॉर्नर्स. एक्सट्रीम कॉर्नर्स आप ऐसे समझ सकते हो जैसे अगर आपके घर की बात करें, इन योर हाउस, in your bedroom, study room, if you look at the corners, it is something like this. The structure is something like this: pillar, one wall, second wall. So, here in these corners, if I ask you something like this, here in these corners, suppose if any dust particle is there at the bottom or at the top, doesn't matter. And if I ask you to clean that dust particle with the help of a cloth or with the help of a mop only, nothing else, can you remove all the dust particles from these corners? Tell me, with the help of a cloth or the mop only. Can you remove all the dust particles from these extreme corners? Yes or no? What do you think? Obviously not. At some, maybe few or one or two dust particle will always remain. ठीक है. So that is the meaning of dead zone. In the reactor, if any dead zone is there, if molecules by chance get stuck in these dead zone, so they will never be able to leave the reactor. Since these molecules are not participating in the process, these are in the extreme corners. जैसे आपने एफएम में पढ़ा होगा एडीज फॉर्मेशन के बारे में, तो ये एक्सट्रीम कॉर्नर्स में मॉलिक्यूल्स स्टक हो गए. एंड इफ दीज मॉलिक्यूल हैव स्टक इन द एक्सट्रीम कॉर्नर्स, then they will not participate in the process. And if molecules are not participating in the process, then their probability to leave the reactor is zero. That means they will stay there forever. इसलिए हम बोलते हैं ये जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स होते हैं इन्हें डेड जोन कहते हैं, डेड स्पेस, कि यहाँ पे अगर कोई चला गया तो वापस नहीं आएगा कभी. जैसे अगर कोई, इफ एनी ह्यूमन बीइंग गेट्स डेड, ही विल नॉट रिटर्न. So similarly, if molecules are stuck in these extreme corners, they will not come back. So these extreme corners are called dead zones or dead space. और यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल स्टक हो गया तो वो कभी बाहर ही नहीं निकलेगा. एंड इफ मॉलिक्यूल विल नॉट गोइंग टू लीव द रिएक्टर, so obviously the time spent by the molecule inside the reactor will be infinite. So this is due to geometry. You can understand.
ज्योमेट्री अगेन केम इन द पिक्चर। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इधर एक्सट्रीम कॉर्नर्स की वजह से, नाउ इन डेज इन मॉडर्न रिएक्टर्स द बॉटम वी डोंट टेक कीप रेक्टेंगुलर, I, especially for the mixing tanks. For the mixing tanks, the bottoms will be either hemispherical or cylindrical, so that we can prevent these extreme corners and the dead zone formation. Okay. And turbulence, I hope is clear. Turbulence is kind of a vortex formation, you can think. In the mixing tanks, when impeller rotates about its axis, so here one vortex may form. And if vortex has formed, or any, even if vortex is not getting formed, one mixing zone will be there. So if any molecule enters in that mixing zone, ठीक है, अगर किसी को आइडिया नहीं है vortex formation क्या होता है, तो आप इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। घर में एक काम करना, आपके घर में वॉश बेसिन या सिंक होगा, और उसके सेंटर में जनरली एक ड्रेनेज पाइप होता है, उसे ब्लॉक कर देना, जस्ट फिल द वाटर कंप्लीटली। ठीक है, अब टेक अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर, वेरी स्मॉल, even you can say smaller than your nail, ठीक है, and open this valve. So entire water will start to leave through this valve. तो अगर आपने यहाँ पे एक वो piece of paper रखा है, if you put it, so you will see that paper will keep on rotating in this circular path only, and then it will leave. This paper will not go anywhere else in the tank. It will move as it is on a fixed path, fixed circular path, and leave the valve. So ultimately, the point is, if any vortex formation is there, any whirlpool formation is there, so if molecule enter in this mixing zone, in this whirlpool, in this vortex, or in this mixing zone, it will never going to leave that. ठीक है, easily, मतलब never तो नहीं बोलना चाहिए, but we should say this molecule will not leave this zone is so easily. ठीक है, and when this molecule will not leave this so easily, so what will happen? If any new molecule is coming, so it will not be able to enter here. तो एक चीज तो ये है कि ओवर मिक्सिंग हो जाएगी, डिग्री ऑफ मिक्सिंग विल बी अफेक्टेड, the molecules inside the mixing zone will get overmixed. The new molecules are not able to enter here, so they will remain undermixed. So mixing quality will get affected. So that's why we try to prevent the vortex formation. ठीक है, बट यहाँ पे एक फैक्टर ये भी है कि एनर्जी कंजम्पशन की बात आ जाती है। तो आपने पढ़ा होगा स्टड टैंक में कि समटाइम्स इट इज गुड टू हैव vortex formation, sometimes it is bad to have vortex formation. It depends on the ultimate, basically depends on the loss, किस सिनेरियो में हमें एनर्जी का लॉस कम हो रहा है, ओवरऑल लॉस, कैपिटल कॉस्ट कम हो रहा है, vortex formation के केस में या फिर बेफल्स लगाने के बाद उस केस में। तो वो डिपेंड करता है, वो सब आपने प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन में मिक्सिंग ऑफ इक्विपमेंट्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे, हम यहाँ इसकी बात करते हैं, टर्बुलेंस की। तो अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ स्टक है और ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गेट ओवर मिक्स, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज काइंड ऑफ अ टर्बुलेंस, और बेसिकली दिस इज व्हाट, नथिंग बट a large residence time. If any molecule is here in the turbulent zone, in the mixing zone, so it is obvious the molecule is a part of process. So it has some probability to leave the reactor. We can't say it will be zero, just like dead zone. If molecule is there in the process, so obviously it will leave. But after a long time. So that's why in turbulence we say residence time is large. और इसीलिए जब हम उनका एक रेजिडेंस टाइम कर्व ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, तो वो एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व आता है, बिकॉज सम मॉलिक्यूल्स लीव अर्ली ड्यू टू बाईपास, some molecules may leave near the average residence time, some molecules may leave late due to the turbulence having long residence time,
and some molecules might never leave due to the dead zone. So that's how you can break down the RTD curve in different parts: bypassing, average, turbulence, dead zone. So in any reactor, if this dead zone long tail is there, तो it is obvious dead zone is present. और अगर लॉन्ग टेल नहीं है या फिर डेड जोन नहीं है तो ये कर्व क्या होगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, फिर टेल बनेगी ही नहीं. आई होप यू नो दैट फैक्टर. अब यहाँ पे अगर आप पीएफआर की बात कर रहे हो, आप में से कोई बोल रहा था पीएफआर पीएफआर, तो सी इन पीएफआर द आइडिया इन पीएफआर वाज, क्या आइडिया था? इन पीएफआर एक्शियल मिक्सिंग होती है क्या? मैं अलग से बता देता हूँ. इन पीएफआर नो एक्शियल मिक्सिंग, so that means no turbulence. In PFR, we already want the molecules to follow this path. We already want them to follow shortest path. If you know the concept of plug flow, so obviously it means no bypassing is also there. And third, you can see there is no dead zone since there is no extreme corner. तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि पीएफआर में कोई भी नॉन आइडियलिटी का कॉज है ही नहीं. अब आप अपना एक कोई दोस्त बनाना चाहते हो या कोई भी, जब आप किसी नई जगह जाते हो आपको लगता है कि यार ये आदमी दोस्त है, ये नहीं है, कैसे पता चलता है? वाइब्स होती है ना, कि उसके अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए. सबसे पहली चीज, मेरे फ्रेंड में ये नहीं होना चाहिए, जो भी चीजें आप डिसलाइक करते हो. ठीक है, तो अगर कोई आपको ह्यूमन मिलता है जिसमें ये सब चीजें नहीं है, तो आप बोलोगे यार ये दोस्त बनने लायक है. ठीक है, सेम यही पीएफआर में अगर कोई नॉन आइडियलिटी का कॉज ही नहीं है, इसका मतलब ये नॉन आइडियल रिएक्टर हो ही नहीं सकता. और एंड इफ पीएफआर इज नॉट अ नॉन आइडियल रिएक्टर, देन इट विल बी एन व्हाट? That it will be an ideal reactor, almost an ideal reactor. ठीक है, क्योंकि नॉन आइडियलिटी के जो मेन कॉज हैं वो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए हम इसे ऑलमोस्ट एक आइडियल रिएक्टर बोलते हैं. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू how you can explain these things and how you can relate these things with life. So what is an ideal reactor? Ideal reactors are those in which all molecules follow the same path, due to which their residence time is same. In non-ideal reactors, molecules follow the different path due to the presence of dead zone, bypassing or turbulence. That's why their molecules may have different residence time, and thus it is a non-ideal reactor. It is like this, आप ऐसे समझ सकते हो. Just one एक simple example है. If you guys remember, when there was a case going on related to one person for black bug shooting, around 1:30 p.m., the High Court gave him some punishment after a many years. The High Court gave him the punishment, but just after 3 hours, around 4:35 or 4, Supreme Court gave him bail, clean chit. In 3 hours, it was done. He was free. High Court decision was on hold. ठीक है? Maybe many of you know the name. But if you, me, or any other human being in our circle, which have this kind of experience, like High Court is giving him some punishment, and so will the Supreme Court give him the clean chit or the bail in just after 3 hours? Are the rules same for all of us? No. Different people have different rules. You know that. So hence, our country is not an ideal country. So that's why they say when you are doing the voting, do properly so that you can make your country an ideal country. So youth is the power of country. This is the reason, because youth has the power to vote.
So make your own value system like that, that later on when you will serve the country, you will try to make it one ideal country for yourself or your future generation. So this was the message of the day. It was not a sponsored message. None, no one give sponsored me to motivate you for the voting, but still, it is a right of all of us to vote. Anyways, I hope you understand with this simple example what is the meaning of ideal and non-ideal reactor. Okay, so it's quite a time, guys. I hope know you have some other sessions as well. So we will end the session here only today. Sorry for being late. So there were some more question I wanted to discuss with you, like what is Michaelis Menten kinetics and all. So I will talk. If you need, just let me know. I will have one more session on this if it will be possible for us. So this was all about the CRE in these sessions. Now before we end the session, I would like to tell you all of you guys, तो आपके जो juniors हैं या आपके seniors हैं, जितने भी आपके friends हैं, if you know them and if they are also going to prepare for GATE exam, either in chemical, mechanical, or any other stream. So you can inform them about this scholarship test, Unacademy scholarship test for GATE 2025 exam. ठीक है, ये हमारा 26 मई को होगा at 11 AM और 30 minutes का ही टेस्ट है, जिसमें हमारे जो टॉप 50 रैंकर्स हैं, they will have the chance to get some scholarship. ठीक है, like 26 मई को 11 AM 30 minutes की ड्यूरेशन का टेस्ट है, बहुत छोटा सा टेस्ट है. तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हो, जो भी टॉप 5 रैंकर्स होंगे दे विल बी एलिजिबल टू गेट द 100% स्कॉलरशिप. द अदर नेक्स्ट 5 विल बी एलिजिबल टू गेट 50% स्कॉलरशिप. The next 10 will be eligible to get 30% scholarship, and the last next 30 or the 21 to 50 rankers will have the chance to get 25% scholarship on their subscription. ठीक है, अन अकेडमी पे वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अदरवाइज आप चाहो तो आप इसका भी, आपको वो वेट करने की भी जरूरत नहीं है. ऑलरेडी हमारे सब्सक्रिप्शन प्राइस काफी कम चल रहे हैं इस समय. आपको क्या करना है, पोर्टल पे जाना है और अपना कोड लगाना है ACE009. दिस इज माई एजुकेटर कोड. By the user of this code, you will be eligible to get the discount. Plus, you will get the chance to get the guidance under me and Ankur sir. ठीक है, तो माई कोड इज ACE009, ACE009, एंड अंकुर सर का कोड है आपके, दिस इज माई कोड ACE009, एंड दिस इज द कोड ऑफ अंकुर सर ANKUR 073. तो आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो. ठीक है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता. बोथ ऑफ अस विल बी देयर टू गाइड यू, हेल्प यू. ठीक है, तो 25 एग्जाम के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप पोर्टल देखो, इस समय हमारा ऑफर चल रहा है जिसमें आप अप टू 6 मंथ्स का एक्सटेंशन ले सकते हैं. ठीक है गाइस, तो आपको क्या करना है, अगर आप 25 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 9 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारी कॉस्ट पड़ रही है अराउंड 14,999. ठीक है, बट यूजिंग दिस कोड यू विल गेट सम 3 मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, मतलब पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा अगर आप कोड लगाते हो और 25 मई से पहले लेते हो. और अगर आप 2 इयर्स प्रोग्राम का कोड सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, सॉरी 24 मंथ्स का, तो आफ्टर यूजिंग माई कोड यू विल गेट सम एडिशनल 6 मंथ्स, मतलब वो 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा आपका ओनली इन 24,999 के प्राइस में. ठीक है, तो आप ये देख भी सकते हो. लेट मी हेल्प यू, लेट मी शो यू दिस. I think it is not visible now due to any reason.
कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको अलग से बता देता हूँ। आप अगर अनअकैडमी के पोर्टल पे जाओगे, आपको अपना क्या करना है, वहाँ पे बस अपना गोल सेलेक्ट करना है। जस्ट ऑन गो ऑन द अनअकैडमी पोर्टल, अनअकैडमी वेबसाइट, या फिर अनअकैडमी ऐप से भी आप कर सकते हो। वहाँ पे यू जस्ट नीड टू फर्स्ट एंड लॉग इन बाय यूजिंग और मोबाइल नंबर। They will ask you for OTP for verification, and then you will be entered. And there you just need to select your goal like gate and ESC, and you need to select there gate, ME and CH, एंड उसमें फिर आपका केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर वहां पे आपका पे के लिए ऑप्शन आएगा। तो जब आप पेमेंट पेज पे जाओगे, देयर यू हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट फॉर द 9 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। तो जब आप उन्हें सेलेक्ट करते हो, तो आप यू विल गेट सम एक्स्ट्रा मंथ्स देयर। ठीक है, एंड दिस ऑफर इज वैलिड टिल 25 मई। तो अगर 25 तारीख से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको एक्स्ट्रा मंथ मिलेंगे। ठीक है, एज मेंशनड हियर। तो अगर आप 24 ईयर्स का लेते हो, तो आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। 9 मंथ्स का लेते हो तो 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसमें आपके 12 मंथ्स हो जाएंगे। ठीक है, 12 मंथ्स प्रोग्राम आपका 15,000 का पड़ेगा ऑलमोस्ट, एंड 24 मंथ वाला 25,000 का। तो जो लोग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, वो 2 ईयर्स प्रोग्राम ले सकते हैं। जो फाइनल ईयर में है या पास आउट है, वो 1 ईयर का प्रोग्राम ले सकते हैं। अगर आप में कोई ऐसा है जो जिसका सब्सक्रिप्शन एंड होने वाला है और आप दोबारा प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो टेक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप कम रेट में पूरे ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें आपको मल्टीपल बैचेस में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। लाइक वन विजन बैच इज गोइंग, विच इज अ इंग्लिश बैच कंप्लीटली फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा CRE ऑलरेडी चल रहा है, एंड फ्रॉम 30th May वी विल स्टार्टिंग प्रोसेसर कैलकुलेशन। ठीक है, CRE ऑलरेडी वहाँ पे ऑन गोइंग है। तो आप उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लाइव क्लासेस कर सकते हो, साथ ही साथ डाउट पूछ सकते हो। और आपका PC स्टार्ट होगा 30th May से। ठीक है, इसके अलावा आपका एक बैच और चल रहा है जो हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए। वैसे विजन बैच में एक वी विल नॉट ओनली स्पीक इन इंग्लिश, बट वी विल ऑल्सो स्पीक इन हिंदी इफ एनी हिंदी स्पीकिंग गाय विल बी देयर। ठीक है, जैसे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो वी विल ट्रांसलेट फॉर देम। बट अगर आप नीव बैच को देखोगे या प्रतिज्ञा बैच को देखोगे, जो हमारे 17th मई से स्टार्ट हुए थे, वो टोटली हिंदी बेस्ड है। वहाँ पे इंग्लिश में आपसे कोई इतनी बात नहीं की जाएगी, मोस्टली सब हिंदी बेस्ड ही होगा। ठीक है, हाँ, नोट्स वगैरह आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, बट प्रॉपर आपका शुद्ध हिंदी में होगा, वो कोई इशू नहीं है। ये हमारे रैंकर्स हैं लास्ट ईयर के, जिसमें 7 रैंक 1 आए थे हमारे फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स। केमिकल में हमारा फ्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हमारा फर्स्ट रैंकर था आदर्श। जो हमारे प्लस स्टूडेंट थे, उनमें हमारे 40+ स्टूडेंट फर्स्ट टॉप 100 में आए थे केमिकल में। यू कैन सी द फोटो, मे बी इसमें आपका कोई सीनियर भी हो। और इसी तरह आप भी अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो, जिससे उन्हीं के पास भी चांस रहे अंकुर सर और मेरी गाइडेंस में प्रिपेयर करने का, सो दैट नेक्स्ट ईयर 25 के लिए जब हम हॉल ऑफ फेम बनाएंगे, तो वहां पे उनका फोटो आराम से हम पब्लिश कर पाए और उनके पास चांस हो थोड़ा सा शो ऑफ करने का, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करने का। ठीक है गाइस, तो दिस इज माय एजुकेटर कोड ACE009। तो in case you want to take the subscription on an academy, I will still suggest all of you to first discuss. So you can join me, you can communicate with me on my Telegram channel. This is my Telegram channel, Gate with S. तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से हमारे डिस्कशन ग्रुप के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और मेरा एजुकेटर कोड ACE009 है। तो अगर सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप अपनी वो क्वेरी सॉल्व करने के बाद ही ज्वाइन करना, क्लास लेना। So that's all for the day, guys. See you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Tada. Have a great day. Good luck.